We approached founders of ShareChat. Can we work from your office? They said yes. और फिर हम लोग भी स्लीपिंग बैग्स और अपना कुछ कुछ लैपटॉप बेसिक सामान लेके हम उनके ऑफिस पहुंच गए. And then we stayed there for 3 months. ऑफिस में उनके एम्प्लॉइज के लिए जो खाना बनता था वही खाते थे. We used to shower in their common washroom. आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि कुछ लोग बार बार फेल होने के बाद भी सेम चीज क्यों करते हैं, सीखते नहीं क्या? सो लेट्स डिस्कस दिस विद समवन हु हैज डन एग्जैक्टली दिस. टुडे वी टॉक टू समवन हु फेल्ड मल्टीपल टाइम्स बैक टू बैक. ही स्लेप्ट एट हिज फ्रेंड्स ऑफिस फॉर गुड 3 months. वहीं सोना, वहीं नहाना, ब्रश करना, सब कुछ. लोग ऑफिस आ रहे हैं तो 3 दोस्त किसी और के ऑफिस में स्लीपिंग बैग में सो रहे हैं. स्ट्रगल स्टोरी है, राइट? बट देन eventually he built this crazy big company that serves over 3 crore people in the country today. आज हम बात करेंगे हर्ष पोखरना से, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ OkCredit. सो वेलकम गोवेंचर पॉडकास्ट के सीजन 2 पे. आई एम प्रदेश कुमार, आपका होस्ट एंड को फाउंडर ऑफ फंक्शन हब. आई हैव रन मल्टीपल कंपनीज, रेज्ड एंड बर्न कैपिटल एंड हैव शट स्टार्टअप्स डाउन टू. फेल हुआ, लर्न किया, सक्सीड भी किया एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट द स्टार्टअप एंड बिजनेस वर्ल्ड कैन ऑफर. हेंस गोवेंचर एक फ्रेंडली रिमाइंडर है उन सभी हैक्स एंड स्ट्रेटजीज के लिए जो जरूरी हैं ग्रो करने के लिए एंड टू अचीव योर ड्रीम्स. Lastly, join our group in the description to share stuff and startup networking with like-minded folks. And thank you for all the love and comments that you share. It means a lot. Hi Harsh, welcome to the podcast. Hi Pritesh, thank you for having me. So Harsh, सबसे पहले start करते हैं. You have started working from Goa. And let's say people want to move to Goa. A lot of people, ना बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं गोवा से. And what if someone is looking to move and work from Goa? Uh, what would you tell them? Yeah, I will tell them that while this sounds very fascinating, but it is difficult because productivity hamper hoti hai when you move, and there are a lot of distractions that also come with it. So you have to be very mindful and train yourself well so that you can work productively even when you are away from office or you are uh, working at different places. So for me, my lifestyle is not like only working from Goa. The kind of lifestyle I want to build for myself is being able to work from anywhere I want. Just if for the last 1 month I was in Auroville, near Pondicherry, and I spent a month working from there, and then I came back, and maybe next month I'm going back to Jaipur to work from there. So I think this kind of lifestyle requires training and a lot of discipline to you know do away with the distractions and still be productive. So So wo is a risk. just like working like a digital nomad, right? Yes, yes. ठीक है. और एक दिन के एक पर्टिकुलर डे की बात करें हर्ष, यू आल्सो टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रैक्शंस. तो एक दिन कैसा दिखता है गोवा में, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग? जैसे हम लोग हॉलिडे के लिए जाते हैं गोवा में तो वो दिन बहुत अलग दिखता है, राइट? बट व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम गोवा वो दिन कैसा दिखता है? मेरा इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखता एक्चुअली, मतलब बिकॉज लाइक आई हैव टेकन अ हाउस व्हिच इज अवे फ्रॉम द बीच, थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया में ही है. तो आई जस्ट वेक अप, आई डू माय एक्टिविटीज, गेट आई गो टू द जिम. शुरू में मेरे घर के पास जो है, आई कम बैक फ्रॉम द जिम, आई ईट सम breakfast, and then I get to work. I do work until like for 2-3 hours. फिर अगर मेरा मन होता है तो आई गो टू अ कैफे आउटसाइड, सब कुछ शांत कैफे मुझे पता है, वेर आई कैन गो हैव अ कॉफी, मे बी ऑल्सो हैव सम लंच वगैरह. वहीं से काम करता हूँ. And evening में after 5 or 6, I think there's the benefit that I can go out, be near the beach, और कोई थोड़े से नेचर में कहीं जा सकता हूँ. I spend 1 or 2 hours there, relaxing myself, just maybe meeting a few people. Come back again, do some work at home or maybe from a cafe, and then read books, sleep. मतलब वैसे ही है. It's not very different. I think like weekends are very different because as soon as I get a weekend, or some one and a half day, then I can actually make a better plan and go nearby, like have fun, go to a waterfall or go to like some activity. तो वो सब कर सकता हूँ.
I think seems interesting, but I think very much similar है ना हर्ष यहाँ पे भी लोग for example I'm based out of Bangalore. Bangalore में भी people look up to weekend आएगा and we will Yes, chill out. I think looks very similar. Uh, yes. but Harsh, एक बार I want to talk about your life and your life has been probably what the every entrepreneur goes through, a lot of entrepreneurs go through, right? बहुत क्लासिक उसका ना एक एपिटोम है, राइट? तो थोड़ा अर्ली कैरियर के बारे में बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है ऑफ योर्स, राइट? अर्ली कैरियर के बारे में बात करते हैं एक बार के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट? आईआईटी कानपुर से जॉब लगी फ्लिपकार्ट में, आई बिलीव 6 महीने Yeah. में फ्लिपकार्ट क्यों छोड़ दिए? व्हाट हैपेंड? ऐसे मन में मन किया कि बस आज छोड़ देते हैं हम। आई Actually, it I, I, was I think I have a similar story, but I want to understand कि entrepreneur का साइक है and thinking है ना, risk reward evaluation, ये सब मैं समझना चाहता हूँ कि I'm trying to understand that, yeah. नहीं, so see, like I always had a itch कि मेरे को खुद का अपना कुछ करना है। वो itch थी ही अंदर से। मोर मैं फ्लिपकार्ट में लैंड कर गया, दैट इच ओनली ग्रू स्ट्रॉन्गर हम्म, बिकॉज वन, फ्लिपकार्ट इन 2014 वाज द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। हम्म, अपन पास जितने भी लोग गए थे, एवरी वन वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स एंड देयर वर सो मेनी स्टार्टअप्स कमिंग अप, और सबका फ्रेंड या सबका कोई ना कोई कुछ स्टार्टअप कर रहा था। तो इवन विद इन फ्लिपकार्ट वी ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट how startups are the coolest thing to हम्म, do। एंड फ्लिपकार्ट के अंदर भी वो स्टार्टअप वाली एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो when I landed in Bangalore, you know, spent some time in Flipkart, I was completely hooked and I was sure कि I wanted to do a startup. Um, and also, like what I was doing at Flipkart was not giving me any satisfaction। मतलब I felt कि ये बिल्कुल ही क्योंकि कॉलेज से नए नए बच्चे लाए, बस आप डेटा निकालो and beautify that data and send it in a presentation to someone senior, like that was the job I was essentially doing, and I thought that I was capable to do much more। Also at that time I had no liabilities, like my parents are self-sufficient, I did not have any financial liabilities in that way, so whatever I was earning, I was saving, or so I collected some good savings. And 6 month के बाद, I also got a bonus. I got the top bonus in, like जितने भी हम लोग join किए थे. So I thought this is the perfect opportunity. Now I have some money. I also got some bonus. The day I got the bonus, I resigned. I went to my manager and I said कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ. He also knew. I think he knew कि इसका यही होने वाला है. So हम्म। this got I me. think I think ना फ्लिपकार्ट के ना बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। आई थिंक अराउंड as far as I know around 200 people from Flipkart, ex Flipkart people have started their own companies, right? Yeah. Yes. What's typically now called as the Flipkart mafia, right? I think it consists of companies like Udaan, PhonePe, also Cult, I think Navi bhi hai, Yes. Exotel also was started by Flipkart mafia. So what's happening at Flipkart? इतने सारे लोग I think almost 40-50 of them are decent sized companies। 200 कंपनी स्टार्ट हुई हैं, 200 प्लस हैं इनफैक्ट। 40-50 of them are decent sized companies। So my question is what's happening at Flipkart? ऐसा क्या हो रहा है? इतना फ्लिपकार्ट माफिया क्यों स्टार्ट हो रहा है? ये पता नहीं, मतलब entrepreneurial एनर्जी बहुत ज्यादा थी वहां पे। मतलब हम्म, everyone was talking about startups, और एंड आई थिंक इतना सक्सेस भी देखते हो जब, तो मतलब वो मोटिवेशन आता ही अंदर से कि so I think, and also because of the sheer size of the company, there are so many people working, so मतलब by एवरेज वो नंबर भी लगा लो तो पर कैपिटा तो उतने बन ही जाएंगे स्टार्टअप। yep, इवन yep, ओके क्रेडिट हमारे, लाइक आई थिंक वी आर 1/10 और मे बी 1/20th, और मे बी इवन लेसर द साइज ऑफ फ्लिपकार्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हमारे यहाँ से भी 10-12 स्टार्टअप तो बन ही चुके हैं। nice, 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 nice. So coming back, you quit Flipkart, है ना? And then you built multiple products after that. लाइन से फेल हुए हैं प्रोडक्ट्स, राइट? ठीक है। एंड इट्स इंटरेस्टिंग जर्नी, मतलब उसका बारे में बात करना है जो भी बनाया आपने, राइटर्स टिल द टाइम यू बिल्ड दिस ह्यूज कंपनी ओकक्रेडिट, बट बिफोर दैट वाली जर्नी बहुत क्रेजी है, राइट? बिजनेस नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क टाइप्स कुछ लास्ट टाइम जब डिस्कस कर रहे थे, फिर क्रिप्टो वर्ल्ड में यू एंटर्ड, ठीक है? एंड
उस टाइम कोई जानता भी नहीं था क्रिप्टो, राइट? देन यू गॉट सम सक्सेस विद क्रिप्टो, बट यू Yes. डिडंट टेक इट अप, राइट? हाँ. कुछ सिलिकॉन वैली से एक ऑफर था आपके पास, देन हाँ. अगेन ओके क्रेडिट। हम्म. क्या चल रहा था दिमाग में ओवर द नेक्स्ट मेनी मेनी इयर्स? मतलब अगेन मतलब हाइज एंड लोज थे. आई वुडेंट से कोई एक चीज चल रही थी. कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट होता था कि यस वी हैव फाउंड द नेक्स्ट बिग थिंग एंड हम पूरे एक्साइटमेंट से लग जाते थे. फिर कुछ दिनों बाद लगता था नहीं यार अब वी आर नॉट लैंडिंग एनीवेयर. क्या करें, कुछ और कर लें. एंड हर तरह के डाउट्स आते थे. बट आई थिंक द बेनिफिट ऑफ हैविंग थ्री को फाउंडर्स की एक जने को लगता था तो बाकी दो लोग थोड़ा मोटिवेट करके पिकअप करके आगे बढ़ते थे. सो आई थिंक यही सब चल रहा था. स्पेसिफिक्स में बात करना चाहे तो हम बात कर सकते हैं. बट लाइक ओवरऑल तो मतलब ब्रॉड लेवल पे तो यही था. हाइज एंड लोज थे. कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा डिसीजंस लिए हुए हैं. पेरेंट्स कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो. आसपास के लोगों को देख के व्हेन यू सी योर पियर्स एंड दे आर अर्निंग सो वेल एंड स्पेशली एट दैट टाइम पीपल वर गेटिंग सैलरी जंप्स वर्किंग एट गोल्डमैन सैक्स और like all the top companies. तो उनको देख के लगता था हम क्या कर रहे हैं. But I think there was just some आई self थिंक belief I there. think I want to understand, Harsh, ki, since your products were failing, one Hmm. after the other, right, right, till you ended up with okay, great, but you kept on going, एक के बाद एक प्रोडक्ट बनाते चले गए. What was Hmm. going on there in your mind कि नहीं एक और बनाते हैं, एक और ट्राई मारते हैं, एक और ट्राई करते हैं? हाँ. What kept you going? I want to understand the persistence. उसके पीछे क्या क्या था? Yeah, I would say कि it was like completely the support system that I had behind me. मेरे uh, first of all the co-founders, like I was very fortunate to have co-founders who like are very resilient, right? And even though our products were failing, so they always believed कि हम बना लेंगे. It's a part of the journey and हम बना लेंगे. We just have to keep at it and learn and move on and figure out the next step. So I think like co-founders. Second, my family also. कि वो कभी कभी बोलते थे चीजें बट व्हेन दे सॉ कि यार इसको करना है देन दे आल्सो बिकेम सपोर्टिव एंड दे ऑलवेज मेड मी बिलीव कि आई कैन डू इट. मतलब दिस. तो आई थिंक वो सपोर्ट सिस्टम फ्रेंड्स वगैरह जिससे भी हम मिलते थे लोग मतलब they always made us feel that you can do it. You just have to keep at it. And we also knew that this is the journey of a lot of founders, right? Where they fail for a few times but eventually figure out. Uh, so Hmm. आई थिंक वो था. एंड आई रिमेम्बर गौरव का जैसे ये होता था कि गौरव कहता था कि ये तो मेरा तो 5 साल का पीएचडी है. राइट. मैं तो कॉलेज से निकला हूँ अभी मैंने जॉब छोड़ दी है. दिस इज माय 5 ईयर पीएचडी. तो मैं 5 साल तक तो करता ही रहूंगा. जो भी है उसके बाद देखूंगा कि पीएचडी सक्सेसफुल होती है नहीं सक्सेसफुल होती है. तो वी ऑलवेज हैड दैट काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट की 5 साल तो करना ही है. पीएचडी है हमारी. Got it, got it, got it. ठीक है. And so, and while you're doing all of this, you got a brilliant offer from a Silicon Valley firm, I believe. I would say ना ऐसे में 100 में से 99 लोग ना वो ऑफर ले लेते हैं, राइट? बट यस. आप लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं जाना भाई. ठीक. हाँ. क्यों, क्या सोच रहे थे इस टाइम? सो मतलब अगेन मतलब उस समय तक हम एक तो हमें काफी एक्सपीरियंस हो ही गया था. मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए थे. फेल हो रहे थे. ब्लॉकचेन में भी हम लोग गए थे. क्रिप्टो करेंसीज में हमें अच्छा सक्सेस मिला बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज तो ट्रेड कर लो इन्वेस्ट कर लो एंड यू कैन मेक मनी. तो उससे थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था. बट ब्लॉकचेन को लेके वी वर नॉट रियली कन्विंस्ड. नंबर वन कि ब्लॉकचेन से होगा क्या बिकॉज वी हैड वर्कड विथ मल्टीपल companies and built products for them, pirates, but we never saw any production use case for it. But we always felt that all the companies were doing blockchain just because they wanted to show their management कि we are working on the latest technology and देखो हम भी कुछ project कर रहे हैं. But it never became a production use case या कोई problem solve होते हुए हमें दिख नहीं रही थी honestly जितना हमें समझ आया था. तो that was one. We were not very convinced about blockchain and its use case. Second, अगेन वही वाली चीज थी कि शुरू में हम लोगों के भी दिमाग में आया था कि यार इतने टाइम से फेल कर रहे हैं कर लेते हैं और यही ले लेते हैं. आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. बट
और मेरे तो ज्यादा ही आ रहा था दिमाग में, आदित्य एंड गौरव वर द वंस हु वर लाइक कि यार नहीं, एक और ट्राई कर लेते हैं, एंड एक और ट्राई करके देख लेते हैं कि कैन वी बिल्ड समथिंग, बिकॉज दैट इज द ड्रीम वी स्टार्टेड विथ, एंड if we were to sell that dream, maybe give one more last try and see if it works. And that last try worked. Wow, right, right, right. What's up, guys? Pritesh here. I hope you're enjoying the podcast so far. I want to take a moment to just personally ask you for your help. If you're enjoying the podcast, would you be willing to share it to someone who you think would love it too? Maybe a friend, a family member, or social media, or even in a conversation with someone you can mention. You know, the recommendation means the world to us. And because of people like you that we are able to produce this podcast on a weekly basis. So thank you so much for your support so far, and I would love if you could help us reach more people who would love and benefit from it. Really appreciate it. And now back to what we do best. And this was the fourth try that you did, right? चौथी बार था, वैसे right? तो बीच में तो और भी प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो हाँ, फोर्थ फिफ्थ। ठीक है. I think um uh and then there is this one crazy story about you guys shifting to ShareChat office. में ओके क्रेडिट की बात करते हैं ना, मतलब the current company that you're building, and एक बहुत crazy story है ओके क्रेडिट की, right? When you ran out of money, the company almost died. I believe you shifted to ShareChat's office and यस, stayed there, right? What यस। happened? थोड़ा बताओ. तो अगेन मतलब हम लोग ने ओके क्रेडिट बनाना शुरू किया था, एंड जस्ट बिफोर ओके क्रेडिट वी वर डूइंग दीज ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स, एज आई टोल्ड यू, राइट? तो उससे हमने, बिकॉज इट वाज अ बी टू बी, वी वर डूइंग पायलट्स फॉर सम पीपल, वी मेड अ लिटिल मनी थ्रू दैट, बिकॉज एनीवे वी डिडंट हैव सेविंग्स, हमने जॉब्स बहुत जल्दी छोड़ दी थी, तो वी मेड सम मनी, एंड देन तब हमने डिसाइड किया कि अब वी विल गिव दिस लास्ट शॉट, एंड वी स्टार्टेड, मतलब ठीक है, वी somehow came to ओके क्रेडिट एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट। तो नाउ हमारे पास शुरू में थोड़ा पैसा था, एंड वी वर यूजिंग एट दैट टू पे रेंट, पे फॉर सर्वर्स, एंड पे फॉर ऑल द ऑपरेशंस दैट वी वर डूइंग, एंड इन द between we were also talking to multiple investors, but we were getting rejected from everyone. Y Combinator से भी reject आ गया था, we were talking to multiple other micro stage, early stage investors, but सबसे reject आ रहा था, people were like यार ये कुछ बनेगा नहीं यहाँ पे, मतलब multiple people have tried. But we had that belief that was going on because we were working with the users and we were seeing that we are able to solve their problems, how much they are using it, how much they are appreciating our product. तो हम लोगों को था, तो we were still going. Now, because we were unable to raise money and then our savings were मतलब Hmm. डिप्लीटिंग, तो देयर केम अ पॉइंट, मेरे पास हमारे पास इतने ही पैसे बचे थे कि हम अगले 3-4 महीने के लिए या तो रेंट दे दें अपने घर का, या फिर जो हमारे सर्वर्स का खर्चा आ रहा है और ऑपरेशन का खर्चा आ रहा है वो देते हैं। तो देन वी टुक दैट हार्ड कॉल कि चलो घर छोड़ देते हैं, Hmm. एंड वी आस्क्ड फरीद एंड भानु, Hmm. Hmm. अंकुश, दीज पीपल कि कैन The वी founders वर्क, of ShareChat. founders of ShareChat, who are also our batchmates, ki can we work from your office? Because anyway, we used to visit their office a lot to talk to them, to take guidance वगैरह कैसे क्या करना चाहिए. तो we said कि क्या तुम्हारे ऑफिस में रुक जाएं, and like they didn't even hesitate for a second. The Mhm. moment we asked, they said yes, why not? आ जाओ, काम कर लो. तो like we started working. Uh, और फिर हम लोग भी Mhm. लाइक सब कुछ अपना सामान वामान अपने दोस्तों के घर पे रख के वी लेफ्ट दैट हाउस, एंड वी जस्ट बॉट 3 स्लीपिंग बैग्स फ्रॉम Mhm. डेकेथलॉन, और फिर हमने वो स्लीपिंग बैग्स और अपना कुछ कुछ लैपटॉप वैपटॉप बेसिक सामान लेके हम उनके ऑफिस पहुंच गए, एंड देन वी स्टेड देयर फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक हम वहीं सोते थे, वहीं पे उनके ऑफिस में उनके एम्प्लॉयज के लिए जो खाना बनता था वही खाते थे, एंड like they were very generous in that way. We used to take a lot of help from like their design people, product people, tech people, like used to take a lot of help. uh, we used to shower in their common washroom. उसी के अंदर शावर लेते थे और फिर वैसे ही रह रहे थे, वहीं सोते थे. Yeah. So, so yeah, that was a crazy time, but that like made me understand कि मतलब the three of us are very adaptable, right? Like we can live in any kind of situation.
And I think that was like one of the major belief building system also for the three of us, that we can do anything to make this successful, and we will continue. Uh, एंड व्हाट अबाउट द पीपल एट शेयर चैट ऑफिस, उनको क्या लगता था? वो लोग कुछ बोलते थे कभी? शुरू में तो उनको लगता था कि ये क्या पागल लोग हैं, कौन है कि ये लाइक सुबह हम जो ऑफिस में आते तो सोए हुए मिलते हैं, बिकॉज Gaurav is an early riser. He still wakes up. I am a middle kind of riser. So as soon as there's people started coming in, तो मैं उठ जाता था. But फिर भी, like how do you look when you just wake up? Your hairs are all there, and and then you are going into the washroom, brushing, taking a shower, and rolling back. And the people were always very curious कि ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं? And Aditya is a late riser. So he would not care. He would still keep on sleeping even when people around him are working. So, but then as we developed rapport with people, because as we started talking, we started going for breaks, taking help, then people also started supporting us. And then they यहीं सोएंगे, यहीं यहीं रहने वाले हैं. तो मैं ना आपको एक और क्रेजी स्टोरी सुनाता हूँ, है ना. दिस इज समथिंग दैट आई रेड समवेयर. एक कंपनी है, दिस इज अबाउट अ कंपनी जो ऑलमोस्ट डाइड 30-40 साल पहले. दिस गाय फ्रेडरिक स्मिथ, आई माइट हैव हर्ड ऑफ हिम. ही सेज ना कि अब ट्रक ट्रेन से पार्सल्स नहीं भेजते हैं, प्लेन से भेजेंगे. ठीक है, हम प्लेन से भेजेंगे. फास्टर है, एंड ही थिंक्स कि लोग पे करेंगे. बट व्हाट हैपेंस इज कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस था, एंड 2 साल के अंदर अंदर ना अराउंड 1973 ही रैन आउट ऑफ मनी टू पे द फ्यूल बिल्स. जो प्लेन के लिए फ्यूल बिल्स प्ले करने थे, वो उसके लिए पैसे नहीं बचे. उन्होंने कुछ लोन के लिए अप्लाई किया था जो नहीं आया. सो बेसिकली कंपनी में ना $5,000 पड़े थे, एंड दिस इज ट्रू स्टोरी, नंबर्स आर ऑल्सो करेक्ट. $5,000 पड़े थे, एंड फ्यूल का बिल था $24,000 का. तो okay. व्हाट ही डज इज, फ्रेडरिक स्मिथ, ही टेक्स द मनी, goes to Vegas and gambles. Wow. He plays blackjack with that money. Luckily, he wins. So $27,000 he wins. ठीक है. So the company survives for one more week. 24 का बिल था, one more week the company survives. And eventually the company finally survives because they crack another deal or something. The company is still here. Even in 2023, the company is still there. This is the company that invented कि parcels and couriers जो ना plane से भेजेंगे, which is like the de facto norm. Yes. And some of the craziest death stories, the company's FedEx. I think clearly you have had a very similar experience. But coming back, It's even crazier. You take the money, you go to a casino, win, come back. That's nice. Mm. but coming back ना, अभी recently, uh, okay credit में you guys have reduced your burn by 80% in 1 year, right? क्या ट्रिगर था हर्ष, एंड कैसे टर्न अराउंड किया? दिस बहुत क्रेजी टर्न अराउंड स्टोरी है, कैसे टर्न अराउंड किया? So see, I think ट्रिगर ये था कि 21 एंड में वी 21 मिड 21 एंड के अराउंड वी डिसाइडेड दैट वी शुड गो फंड रेज, right? And because at that time our burn was very high and we had some 18 months of runway, with 15 months of runway with us, we decided कि चलो फंड रेज करते हैं. बट व्हेन वी गॉट इनटू द मार्केट एंड टॉक टू अ फ्यू पीपल, हमें काफी अर्ली सिग्नल्स मिल गए थे दैट द मार्केट इज चेंजिंग, एंड नाउ पीपल आर नॉट solely convinced by your user growth, right? And especially we were a pre-revenue company. We were like very early revenue, बहुत ही कम revenue कर रहे थे. All of story was only based on that, hey, we are organically adding a lot of users and they are retaining very well, and we will later, like do lending or any other basically monetization methods to make money. But the feedback we got from the market was कि this is not working, and this is very early feedback. I think if we would have spent more time, maybe we would have fundraised or not. But at that time we made a decision कि यार ये feedback आ रहा है market से, we have a lot of money, uh, there are ways we can reduce our burn, right? And save that money for a if a bad phase comes. And I think Wala decision was really nice, because after 21 and 22, 23, they've all gone for the worse.
हम्म, especially for pre-revenue companies who are not monetizing. अब लोग तो profit मांग रहे हैं, मतलब हम तो revenue हम्म, भी नहीं कर रहे थे. तो so like we took that decision, and of course it's a painful decision whenever you do it. But so I think we reduced headcount. We let go of almost half of our team. We like killed 3 or 4 experimental products that we were doing at that time, which were moonshots. Joey, we still have belief in a few of them, but we chose not to do them at that time. Uh, and then we reduced our marketing spends, payments where we were doing a lot of spends, we reduced that. So basically multiple spends. Infrastructure पे I think the tech team worked a lot and optimized the infra so much. तो वहां से हमने बहुत सेव किया. So every team at that time just got into कि how can we reduce our expenses, and even the revenue team then started scaling up very fast, and the revenues also grew substantially in that time, primarily through lending. So ये सब किया. I think the hardest part was letting people go. Uh, but yeah, we took certain steps so that everyone gets a job, and if they're not getting a new job, we would still support them in that time period and made sure they got a job. So I think like हम्म, that also helped us build the trust of the team we retained, because they saw that how do we treat people whom we are letting go, and if we are treating them respectfully and helping them until their next opportunity, they had more belief in us ki chalo, uh, they will do the same with us also. हम्म. Got it, got it. And OkCredit probably is one of the largest companies from India to come out of Y Combinator, right? Uh, but वो तो एक अलग story है. The real story is he got rejected by YC 4 times before getting in, right? That is something that people don't know about, right? क्या reason मिलता था? And how do you think you eventually got invited? uh, yeah, see, like every time like we didn't get a reason, because I think maybe reasons are only sent when you are in the final stage of in-person interview, and then they don't select you. Otherwise, I think it's a standard email that they could not select you. Uh, so reason नहीं था मतलब, but yeah, we like and while Y Combinator, we were also rejected by a lot of other investors also. So I think the reasons, uh, which I also agree, in the our initial 3 ideas were that we were just building, imagining problems. Honestly, like our users did not have that problem, or even if they did, those products, like the problems were not so big that they really want to use another product for it, or they were like very small problems that were anyway manageable in their day-to-day lives, and they had some solutions which were not expensive, which were not very time consuming, but not very problematic. So it was our a mistake that we were picking problems that were not that big problems and imagining them to be very big problems in our users' lives when they were not. So I think पहले 3 ideas के साथ तो हमारा यही था. Fourth time we applied with OK Credit also when we got rejected, and that time OK Credit was very early. मतलब I think we had just maybe 10-20 shopkeepers who were using our product. And the reason I feel that we did not make it was, one, because we had very early traction. There was no signs of growth, or like all those retention, etc. And second, we also did not present our story really well, and we were not also very sure that what this can become and how this story will evolve and end up being a large company. So I think we also did not present that well. Next time when we applied, we had good traction, अच्छा traction था. We were very convinced on the story, so we presented that very well. So I think we got And selected. and Harsh, you said कि पहले 3 बार तो users क्या चाहते थे, users की problems क्या थी, you did not know, ठीक है. And fourth time with OkCredit, he knew your user, right? How did that start? I know that you have a brilliant story there, a local story there. How did that start? हाँ, so मतलब again, so that this was the time जब वो Silicon Valley वाला offer था, Mhm. and we did not take it, and we said we will give it one last shot because we have some money we have made from the few projects. So and that is when we really sat down
and we did not jump into building anything, and we decided that now we will really give our best shot. And then we started discussing कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. हमने लाइक बहुत सारा मटेरियल पढ़ा, बहुत सारे लोगों से बातें की, एंड देन वी रियलाइज्ड कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वी वर डूइंग वाज कि हमें कोई आइडिया आता था, एंड बिकॉज वी वर टेक पीपल हम तुरंत बनाने बैठ जाते थे. राइट. Mhm. हम हमें लगता है कि दैट वाज द इजियर पार्ट फॉर अस, एंड टॉकिंग टू यूजर्स, डूइंग अ लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च वाज नॉट द इजी और द इंट्यूटिव थिंग दैट केम टू अस. सो यू आर ऑलवेज लाइक कि हाँ कोई प्रॉब्लम देखी, चलो प्रोडक्ट बनाने बैठ जाओ, एंड देन वी वुड स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोडक्ट, वी वुड स्पेंड some time. And once you start building a problem, you always fall into that trap कि अगर वो नहीं चला, then you will get another idea कि क्यों नहीं चल रहा है, and then you will just keep on working on that product because you don't want to give up, and you will just keep on building कि नहीं ये फीचर नहीं चला, ये चल जाएगा, ऐसे बनाऊंगा तो चल जाएगा वैसे, but it's never going to work, right? Because so this time we made a conscious decision that we will not start building. Right? We whatever problem we are seeing, we will go in the market, we will talk to users, we will do market research and really understand if this is a problem worth solving, if this is something they are really concerned about, and will they, if we build it, will they use it. तो उस पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया. तो उस and problems, and we would do all kinds of tactics, right? We would go and check market pull कि basically हमने 10-15 अगर आइडिया लिखे हैं, तो अगर मेरा एक ओके क्रेडिट वाला था तो मैंने ओके क्रेडिट के लोगों से बात किया, बट मेरे और आइडियाज हैं तो मैं उनके पोटेंशियल यूजर्स से भी बात कर रहा हूँ, एंड आई एम सीइंग विच आर द यूजर्स हु आर कॉलिंग मी बैक टू Mhm. से कि यार हर्ष, you came and discussed this problem, when are you building a product for us. तो उससे मुझे पता चलता था कि मार्केट में पुल कितना है, कि मैं तो किसी से बात करके आया, जब जाते हैं तो एवरीवन सेज कि बहुत अच्छा आइडिया है, नहीं बनाओ बनाओ यूज करेंगे, बट मेरे जाने के बाद कौन मुझे वापस कॉल कर रहा है या कौन मेरे पीछे पड़ रहा है कि यार वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे मेरी. सो वी मतलब हमने बनाने पे नहीं फोकस किया दिस टाइम, वी जस्ट फोकस्ड ऑन रिसर्च, figuring out ki which is the best problem statement to pick, and then go build that real conviction, before we jump into building that product. Because then if we are really convinced, then we would give it our best to solve that. If you enjoyed this, it would mean a lot to me if you subscribe and share your thoughts, reviews, and the guests you want. Join our group in the description and दोबारा मिलते हैं next discussion में.